Hello student, I am Palle sir from Palle Science Academy Udgir. Today we will see the types of chemical reactions. हम आज देखने वाले हैं types of chemical reactions. The chemical reactions involved the making and breaking of bonds between the atoms to form new compound, to form the new substance. हर एक केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक होता है या बॉन्ड बन जाता है और नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट ऑकर इन आवर सराउंडिंग. फॉर एग्जांपल डाइजेशन, respiration, photosynthesis, rancidity of oil, after that oxidation, reduction, after that ripening of fruits, etc. बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमारे सराउंडिंग में होते हैं जैसे कि ऑक्सीडेशन है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. So these are the different types of chemical reactions. As chemical reactions are of many types, first combination, decomposition, displacement, double displacement, oxidation, reduction, exothermic, endothermic, etc. So all these are the types of chemical reactions. In this period we will see the types. First, combination reaction. Combination reaction means the chemical reaction in which two or more reactants combine together to form single product. Such a reaction is called as a combination reaction. जिस रिएक्शन में दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, when magnesium ribbon is burnt in air, it forms magnesium oxide. जब मैग्नीशियम को एयर में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है. Where magnesium ribbon is burnt in air, it forms magnesium oxide. In this reaction, magnesium and oxygen are involved to form single product. Hence, this reaction is called as a combination reaction. Second example, when iron filings are burnt with sulfur powder. When iron filings are burnt with sulfur powder, they form iron sulfide. They form iron sulfide. जब आयरन फिलिंग्स को सल्फर पाउडर के साथ मिक्स करके हीट करते हैं तो आयरन सल्फाइड फॉर्म हो जाता है. नेक्स्ट, when quicklime is treated with water, or we can say that when quicklime is added in water, it forms calcium hydroxide. It forms lime water with liberating heat. जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और हीट लिबरेट हो जाता है. सो these are the examples of combination reaction. One more example of combination reaction, that is when ammonia gas reacts with hydrochloric acid gas. When ammonia gas reacts with hydrogen chloride gas, it forms ammonium chloride. It forms ammonium chloride. Here, this is the equation where ammonia gas reacts with hydrogen chloride gas, it forms ammonium chloride. This is the ammonium chloride. So second type is the decomposition reaction. The chemical reaction in which a single reactant decomposed to form two or more products. Such reaction is called as a decomposition reaction. जिस रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. For example, when calcium carbonate is heated strongly, it decomposed to form calcium oxide and carbon dioxide. जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाते हैं. तो ये एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का. सेकेंड एग्जांपल, दैट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नेचुरली डिकम्पोज्ड to form water and oxygen.
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ये नेचुरली ही डिकम्पोज हो जाता है और वाटर ऑक्सीजन फॉर्म करता है। नेक्स्ट देयर इज द व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, सिल्वर ब्रोमाइड decomposed to form silver and bromine gas, silver and bromine gas. Here I will write the example. So this is the silver bromide, AgBr. Sunlight, when silver bromide is exposed to sunlight, it gives silver and bromine gas, that is a Br2. Br2. A pale yellow colored silver bromide gets converted into silver and bromine. Gray color silver and bromine gas is evolved. This is the example. Next there is a when sugar is heated strongly, it gives simple products such as carbon and water vapors. जब शुगर को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो सिंपल प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं जैसे कि कार्बन और वाटर वेपर्स. The C12H22O11 when strongly heated it gives carbon black and water vapors. So this is the reaction, this is the example of decomposition reaction. When sugar is strongly heated it gives carbon black and water. After this we will see third type of chemical reaction, that is the displacement reaction. It is necessary to know the reactivity series of metals to understand the displacement reaction. So first there is a reactivity series of metals. The arrangement of metals in decreasing or increasing order of their reactivity is called as a reactivity series. In this series potassium is placed at the top of the series and platinum is placed at the bottom of the series. This is the decreasing order of the reactivity of the metals. The potassium is the highly reactive metal and platinum is the least reactive metal. So first the displacement reaction means what? The chemical reaction in which high reactive metal displaces the less reactive metal from its compound to form new compound, that is called as a displacement reaction. जिस रिएक्शन में हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है और नया कंपाउंड फॉर्म करता है, उसी केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जांपल व्हेन जिंक मेटल reacts with copper sulfate solution, when zinc metal reacts with copper sulfate solution it gives zinc sulfate and copper. Zinc sulfate and copper. Here zinc and this is the copper. Zinc is more reactive than copper, therefore zinc displaces copper from copper sulfate to form zinc sulfate and copper. इस रिएक्शन में जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस करता है कॉपर सल्फेट से और फॉर्म करता है जिंक सल्फेट. एंड हियर दिस इज द कॉपर. सेकेंड एग्जांपल दैट इज द व्हेन आयरन reacts with copper sulfate solution it forms iron sulfate and copper. Here iron is more reactive than copper, therefore iron displaces copper from copper sulfate to form iron sulfate and copper. So these are the two examples of displacement reaction. Third example, when metals react with acids. Here this is the hydrochloric acid. When zinc reacts with hydrochloric acid, it forms zinc chloride and hydrogen gas. Here this is the third example of displacement reaction. So after this we will see fourth type of
chemical reaction, that is a double displacement reaction. Double displacement reaction means the chemical reaction in which the ions of the reactants are exchanged to form precipitate. Such reaction is called as a double displacement reaction. जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट के आयंस एक्सचेंज होते हैं और प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऐसे भी कहते हैं. So we will see examples of double displacement reaction. So first example of double displacement reaction is that where copper chloride reacts with potassium iodide, we get the brown precipitate of cupric iodide. Here this is the copper chloride. When copper chloride reacts with potassium iodide, it gives cupric iodide, which is brown color precipitate, and potassium chloride. Second example of double displacement reaction is when barium sulfide reacts with zinc sulfate. जब बेरियम सल्फाइड जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट होता है तब बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, which is white in color. This white colored barium sulfate precipitate is formed when barium sulfide reacts with zinc sulfate. So this is the second example of double displacement reaction. इस रिएक्शन में बेरियम सल्फाइड जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट होता है और व्हाइट कलर का बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है. थर्ड एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज दैट when potassium chromate react with barium sulfate. When potassium chromate reacts with barium sulfate, it gives barium chromate and potassium sulfate. When potassium chromate, जब potassium chromate barium sulfate के साथ react होता है तो येलो कलर का precipitate of barium chromate फॉर्म हो जाता है. तो these are the examples of double displacement reaction. वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.